ओ नमो नमः. Learning Sanskrit by verse number 63. Prayer and pledge in Leelavati Paribhasha. Your co-student S.L. Abhyankar, Mumbai, Tuesday, June 30th, 2020. I want to study mathematics in Sanskrit. I want to start with study of Leelavati. But the verse below is a prayer and a pledge. So study of this verse fits as learning Sanskrit by studying verses. Here is the verse. Pritim bhakta janasya yojanayate vignam vinignan smrutam tam brundaraka brundavandita padam nattvamatangananam patim sadganitasya vachmi chatura priti pradam prasfutam संक्षिप्ताक्षर कोमलामलपदैर् लालित्य लीलावती. It is already mentioned that the prayer is composed in Shardula Vikriditam meter. In this meter, all four quarters have 19 letters each. Their matraha being in the pattern Dve Dve Dve, Eka Eka Dve, Eka Dve Eka, Eka Eka Dve, Dve Dve Eka, Dve Dve Eka, Dve. Masajasa Tata Ga Ganaha. And that is why it is quite rhythmical. May I read it again? Pritim bhakta janasya yojanayate vignam vinignan smrutam tam brundaraka brundavandita padam nattvamatangananam patim sadganitasya vachmi chatura priti pradam prasfutam संक्षिप्ताक्षर कोमलामलपदैर् लालित्य लीलावती. I do not have a very musical voice, but the rhythm is so good. शार्दूल विक्रीडितं वृत्तम्. पदच्छेदः. प्रीतिं भक्तजनस्य यः जनयते विघ्नं विनिघ्नं स्मृतं तं वृंदारक वृंद वंदित पदम नत्वा मतंग आननम पाटीम सद्गणितस्य वच्मि चतुर प्रीति प्रदाम प्रस्फुटाम संक्षिप्त अक्षर कोमल अमल पदैः लालित्य लीलावती. There are 3-4 compound words which have quite a number of component words. So I have tried to identify the component words, separating them by dash within the compound word. पदाभ्यास सहिताः अन्वयार्थः. यः भक्तजनस्य विघ्नं विनिघ्नं प्रीतिं जनयते. यः यत् सर्वनाम पुल्लिंगम प्रथमा एकवचनम ही हु. भक्तजनस्य भक्तजनः डिवोटी devotees. Because of the janah it gets the sense of a plural, so devotees. पुल्लिंगम षष्ठी एकवचनम भक्तः च असौ जनः च कर्मधारय. विघ्नं कैलेमिटी नपुंसकलिंगम द्वितीया एकवचनम. विनिघ्नं वि प्लस नि प्लस हन द्वितीय गणीयः परस्मैपदी. टू किल, एलिमिनेट, रिमूव. तस्य शत्रुकृदन्तं विनिघ्नत् विशेषणम्. अत्र पुल्लिंगम प्रथमा एकवचनम विनिघ्नन्. प्रीतिम स्त्रीलिंगम द्वितीया एकवचनम. जनयते जन चतुर्थगण
चतुर्थः गणः आत्मनेपदी। नीचि उभयपदी, अत्र आत्मनेपदी। नीचि इज कॉजेटिव, प्रयोजक। अदरवाइज जन चतुर्थगण आत्मनेपद इन प्रथम पुरुष एकवचन लट लकारः becomes जायते, but here it is janayate, so it is causative, nich prayoga. And in nich prayoga most of the dhatus take ubhaypadi forms. Here janayate is atmanepadi, to generate. लट लकारः प्रथम पुरुषः एकवचनम्। यः भक्तजनस्य विघ्नं विनिघ्नन् प्रीतिं जनयते। He who removes calamities of devotees in turn generates love, devotion in them. तं स्मृतं वृन्दारक वृन्दवन्दित पदं मतंगाननं नत्वा। तं तत् सर्वनाम, पुल्लिंगम द्वितीया एकवचनम, टू हिम। स्मृतम, स्मृ प्रथमगणीयः परस्मैपदी, क्त स्मृत स्मृत, रिमेम्बर्ड, डिस्क्राइब्ड इन स्मृति लिटरेचर, विशेषण। अत्र पुल्लिंगम द्वितीया एकवचनम। वृंदारक वृंदवंदित पदम, प्रातिपदिकम वृंदारक वृंदवंदित पद, पुल्लिंगम द्वितीया एकवचनम। वृंदारकानां वृंदाः, षष्ठी तत्पुरुष। नोट, वृंदारकः मीन्स एमिनेंट पर्सन and वृंदः मीन्स होर्ड, ग्रुप. So वृंदारक वृंदाः, hordes of eminent persons. वृंदारक वृंदैः वंदितम, तृतीया तत्पुरुष। Respected by, वंदितम respected by hordes of eminent persons, वृंदारक वृंदैः। वृंदारक वृंद वंदिते पदे यस्य सः बहुव्रीहि। He who has feet which are respected by hordes of eminent persons. मतंगाननम, प्रातिपदिकम मतंगानन, विशेषणम। अत्र पुल्लिंगम द्वितीया एकवचनम। मतंगस्य आननम यस्य सः, बहुव्रीहि। मतंगस्य, मतंग, एलिफेंट, पुल्लिंगम षष्ठी एकवचनम। आननम, आनन, हेड, नपुंसकलिंगम प्रथमा एकवचनम। मतंगाननम, unto him who has head of an elephant, so unto Ganesha. नत्वा, नम प्रथमगणीयः परस्मैपदी, टू बो टू। नम त्वा नत्वा, अव्ययम्। तं स्मृतं मतंगाननं नत्वा। After paying obeisances to elephant-headed Ganesha, who is remembered in Smritis and has feet which are respected by hordes of eminent persons. सद्गणितस्य चतुरप्रीतिपदां प्रस्फुटां लालित्यलीलावतीं पाटीं संक्षिप्ताक्षरकोमलामलपदैः वच्मि। सद्गणितस्य, सद्गणित प्रातिपदिकम, नपुंसकलिंगम षष्ठी एकवचनम। सद्गणितम इति सद्गणितम, कर्मधारया, गुड मैथमेटिक्स। अथवा और सतां गणितम, षष्ठी तत्पुरुष, इति सद्गणितम, मैथमेटिक्स ऑफ गुड पीपल। सताम, सत, जेंटल, विशेषण। अत्र पुल्लिंगम षष्ठी बहुवचनम। नोट, सत इज इक्वल टू जेंटल एज इन सत प्लस जनः सज्जनः। चतुर प्रीति पदाम प्रदाम, चतुर प्रीति प्रदा इति प्रातिपदिकम, विशेषणम। अत्र स्त्रीलिंगम द्वितीया एकवचनम। प्रीतिम प्रददाति,
इति प्रीतिप्रदा उपपद तत्पुरुष. What begets affection? चतुरेभ्यः प्रीतिप्रदा. चतुर्थी तत्पुरुष. चतुरेभ्यः चतुर वाइज विशेषणम. अत्र पुल्लिंगम चतुर्थी बहुवचनम. चतुर प्रीतिप्रदा capable of begetting affection of the wise. प्रस्फुटाम. प्रस्फुटा very clear. विशेषणम. अत्र स्त्रीलिंगम द्वितीया एकवचनम. लालित्यलीलावतीं. लालित्यलीलावती प्रातिपदिकम. विशेषणम. अत्र स्त्रीलिंगम द्वितीया एकवचनम. लालित्ययुता च इयं लीलावती च मध्यमपदलोपी कर्मधारय. लालित्येन युता having literary merit. Leelavati playful, and work of this name also. Lalitya Leelavati, work named as Leelavati, which has literary merit and is also playful. Patim. Pati means arithmetic. स्त्रीलिंगम द्वितीया एकवचनम. संक्षिप्ताक्षर कोमला मलपदैः. प्रातिपदिकम संक्षिप्ताक्षर कोमला मलपद. नाम नपुंसकलिंगम तृतीया बहुवचनम. संक्षिप्तानि अक्षराणि यस्मिन् तत् संक्षिप्ताक्षरम. बहुव्रीहि. संक्षिप्तानि सम प्लस क्षिप. चतुर्थगणीयः परस्मैपदी, षष्ठमगणीयः उभयपदी च. सम प्लस क्षिप क्त संक्षिप्त एब्रिविएटेड. अत्र नपुंसकलिंगम प्रथमा बहुवचनम संक्षिप्तानि. अक्षराणि प्रातिपदिकम अक्षर लेटर. नपुंसकलिंगम प्रथमा बहुवचनम. संक्षिप्ताक्षरम कोमलम अमलम च इति संक्षिप्ताक्षर कोमलामलम. संक्षिप्ताक्षर कोमलामलम पदम इति संक्षिप्ताक्षर कोमलामलपदम कर्मधारय. कोमलम कोमल सॉफ्ट विशेषण. अत्र नपुंसकलिंगम प्रथमा एकवचनम. अमलम न मलः यस्मिन् तत् अमलम. नय बहुव्रीहि. मलः डर्ट impropriety. अमलम devoid of dirt. न मलः. पदम word. नपुंसकलिंगम प्रथमा एकवचनम. संक्षिप्ताक्षर कोमलामलपदैः with words which help brevity, which are soft and are clean. अमल. वच्मि. वच् धातु द्वितीयगणीयः परस्मैपदी लट् लकारः उत्तमपुरुषः एकवचनं वच्मि. सद्गणितस्य चतुरप्रीतिप्रदां प्रस्फुटां लालित्यलीलावतीं पाटीं संक्षिप्ताक्षरकोमलामलपदैः वच्मि. वच्मि I shall speak. पाटीं वच्मि I shall speak arithmetic, part of mathematics. Sadganitasya, as is liked by gentlemen. Chatura Priti Pradam, in a manner which will please the wise. Prasfutam, which will be very clear. Lalitya Leelavatim, which will be playful and which will have literary flavor. Using words, Sankshipta Komala Malapadahi, using words that will have brevity, Sankshipta Akshara, softness, Komala, and Amala will be clean. Swadhyaya. Here,
The pledge is for dealing with a subject such as arithmetic with literary flavor. That is exceptional. But some hint of literary flavor can be already seen in this verse itself, with some onomatopoeia of v and the in Vrundaraka Vrundavandita Padam, as also of pra in Priti Pradam Prasfutam, and of la in Lalitya Leelavatim. Shubhamastu.